Hello everyone, this is Amritpal, founder of Amritpal Vision. Today I am interviewing one of my students, Mr. Tirth Vyas, who recently got his German student visa approved from German Consulate, Mumbai. He is going to Germany for pursuing his bachelor's in mechanical engineering from FH Aachen. He has already finished his 1 year of freshman year, which is a Studienkolleg in Germany. Here in India, due to pandemic, he finished here itself. And right now he is flying directly for his bachelor's in mechanical from FH Aachen. So Tirth, first of all, congratulations on getting the visa of Germany, student visa of Germany. Thank you so much, sir. So how you are feeling today? I'm feeling like I am going to achieve my dreams, and this is the biggest step I have ever taken. And yes, I'm really happy. Good, and congratulations for that. Thank you so much, sir. So Tirth, can you please explain me about your profile when you applied and when you finished your 12th standard, and about your profile? Detail about your profile. Okay, firstly, myself, Tirth Vyas. I have completed my 12th science in 2018. After that, I have looked for a good college, but after not getting a good result. So I contacted Amritpal Vision. That I came through a particular exam conducted by Freshman Institute, FH Aachen. So in 2020, I cleared my exam and I got admission. After that, I have started my study in October. I have successfully completed this whole year in India, studying German and other odd subjects. And now I'm successfully getting my admission in my mechanical engineering, which I'm really excited for. Okay, so I will give you a bit idea about his profile. He completed his 12th in 2018, and he has also completed his 2 years of bachelor's here from India, but he was not satisfied with his bachelor's studies, what he have done here in India. He contacted me and he told me, sir, I want to go to Germany for doing my direct bachelor's, because he was already having his 1 year of 13th year here in India. So at that time he was eligible to go to Germany directly for bachelor's, but I recommended him that, okay, you are going to Germany for your bachelor's, and that too in German thought program. So I recommended him to at least do his Studienkolleg, so that he would be get comfortable before he gets into the German bachelor's, because doing bachelor's in Germany, and that too in German, is not everybody's cup of tea. So yes, he is very happy right now because he has completed his 1 year of Studienkolleg. He got to know about each and everything, that what German engineering would be in future. So Tirth, how was your experience of doing 1 year of Studienkolleg in Germany? In the beginning, I was really scared because all I have to learn was a completely new language with all new people all over the world. So I was a bit nervous and scared, but after joining, I really feel like really friendly. It was really friendly, and slowly I have started gaining knowledge about it. And after that, I believe myself that I can do this. If I can do this, I can do everything. So it was really good experience for me. True. So which subject you have learned in your freshman year, that is Studienkolleg? In Studienkolleg, I have learned German as a main subject, maths and physics. The extra subjects were there, like office course and academic skills. Okay. So the main 3 subjects were German, maths and physics. Yes, German, maths and physics. Okay, so can you tell our viewers that how Amritpal Vision has helped you to get into this FH Aachen's mechanical engineering? Yeah, sure. As per my profile, Amrit sir said at beginning that I wasn't eligible for German. So at that time I was collapsed. But then he told me that there is an exam through which I could get in Germany and complete my dreams. So I have followed his dreams. I have followed his steps and I have achieved my dream. So the biggest thank to Amrit sir that he has helped me to know about this exam. Without this exam, I won't be going to Germany. So thank you so much, sir. Welcome. So I will give you the idea what he is saying. He was having very less percentage in his 12th standard. I can't tell you his percentage, but it was very less.
because he were having some sort of problems during his 12th exam, so he couldn't score well. So he came to me, sir, I want to go to Germany. So I straight away said that, okay, it is not possible because you have very less percentage and I cannot get your admission from any German university. But when I told him about FH Aachen's Freshman Institute, they conducted the Aufnahmeprüfung online last year due to this pandemic. And in FH Aachen's this Freshman Institute exam, no matter you have 30%, 35%, or not 30%, but if you have more than 40%, you can sit in that exam. And if you clear that exam, you will get the offer letter from Freshman Institute, and for your bachelor's in mechanical or in biomedical courses from FH Aachen itself. And it becomes very easy if student has some less percentage due to some problems in 11th or 12th. And after this exam, he got his result and he passed that result. And within 30 days, he also got his visa. Generally, if you get the admission with such a low percentage, there is a difficulty to get the visa. But FH Aachen is very reputable institute in Germany, so he got his visa in one go, and that too very early. He got his visa in just 29 working days. So again, if you have less percentage, don't worry. There are some institutions in Germany, the public institution in Germany. If you can get into that, you can easily get your German student visa also. So that it was very nice talking to you. So I want to know about 5 words, short 5 words about Amritpala vision. Okay. Means you have to describe Amritpala vision into 5 words. Okay. So, firstly, it was trustful. It was supportive, friendly, always available, and 5th one. and best best immigration company I have ever known. Thank you. So if I say you to rank Amritpala vision on the scale of 10, where 10 is the best and 1 is the worst, so what would be your ranking? I would totally give Amritpala vision 10 out of 10. Thank you very much. So what tips you want to give to the students who are planning to come to Germany next year or next intake? So I would like to tell you, if you have selected Germany, you have taken one of the best paths. But if you want to increase your chances to get visa and to get in Germany, I would please recommend you to contact Amritpala vision. It's the best way. Thank you. So if you want to go to Germany, if you have any doubts regarding German education or regarding German student visa, you can always contact us. Our website name is amritpal.com. We have all the social media handle where you can get all the information regarding German intakes, universities deadline, and our new web series, which is Study in Germany with Amritpal, the End Game. We have launched our first web series ever in this education sector. स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ में हैं तीर्थ व्यास के पेरेंट्स. तीर्थ को अभी स्टूडेंट वीज़ा मिला है जर्मनी का. वो FH आखन में जा रहा है बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए. तो आज हम लोग तीर्थ के फादर से बात करेंगे अबाउट एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस क्या था हमारे साथ और उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई इस पूरे जर्मन स्टूडेंट वीज़ा लेने में, एडमिशन्स में. तो आज हम लोग उनके साथ बात करेंगे. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू सर. कैसा लग रहा है आपका स्टूडेंट वीज़ा, आपके बेटे का जर्मन स्टूडेंट वीज़ा आ गया? बहुत वी आर हैप्पी, वेरी हैप्पी. डन. सर, आपको हमारे को हायर करने, आपने हमारे को क्यों हायर किया? एक्चुअली बहुत टाइम पहले हमारा एक स्टूडेंट के साथ बातचीत हुआ. हाँ. जो आपके वहाँ से ही उसने फाइल किया था. हाँ जी. तो उसने हमको बोला कि ये विज़न जो है उसमें आपको फाइल करना है, वो डन होगा और अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिलेगा. तो इसीलिए हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए. तो हमारा थोड़ा प्रोफाइल वीक भी था. फिर अमृतपाल सर ने हमको एक अपॉर्चुनिटी दिया कि FH आखन में एक एग्ज़ाम है जो उसको अपीयर करना है. जो वो पास होता है तो उसके लिए FH आखन में एडमिशन कंफर्म हो सकता है. तो हमारे लिए एक स्कोप हो गया. तो हमने वो एक्सेप्ट किया और मेरा सन भी उसके पीछे बहुत मेहनत किया.
सर ने भी बार बार उसको गाइड भी किया, उसके पूरे स्टाफ ने, उनके स्टाफ ने भी बहुत हेल्प किया हमको कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम भी उसने बहुत अच्छी तरह से पास आउट किया, फिर एडमिशन भी अच्छा मिला। हमको दिक्कत सिर्फ ये कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हम थोड़ा डिस्टर्ब हुए। बाकी विज़न मीन्स अमृतपाल सर हमारे लिए एक ऐसी हस्ती है कि शायद मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा स्कोप मिला है कि मेरा लड़का, उसका जो कैरियर बनने वाला है सिर्फ और सिर्फ अमृतपाल की वजह से ही बनने वाला है, बाकी नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपको आप हमारे साथ लास्ट 1.5 साल से हो, आपको कभी भी ऐसा लगा कि आप, क्योंकि आप अहमदाबाद में नहीं रहते हो, आप अहमदाबाद से 200-300 किलोमीटर दूर रहते हो, आपको कभी भी ऐसा लगा कि आपको बार बार अहमदाबाद आना पड़ेगा या ऐसा होगा? कोई भी आपको सर्विसेज में थोड़ा दिक्कत हुआ हो, ऐसा कुछ भी आपको आज तक फील हुआ? नहीं सर, ये मेरे लिए जर्मनी या एब्रॉड के लिए वीज़ा के लिए फ़ाइल के लिए मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस था। और फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा कि शायद मैं मेरे फ्रेंड सर्कल्स में और मेरे रिलेटिव्स में भी जिसको जर्मनी जाना है तो मैं उनको वही एडवाइस देता हूँ कि आपको जाना है तो सिर्फ और सिर्फ अमृतपाल सर के थ्रू ही जाना है। बिकॉज ऑफ मुझे सर जो बोल रहे हैं कि मैं इतना दूर से मैं आ रहा हूँ, मगर मुझे उन्होंने इनविटेशन दिया था उनका ओपनिंग के लिए, फिर भी मैं नहीं आ पाया था। मगर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, फोनेटिक बात होती थी हमारी, और कभी कभी सर बिजी भी होते थे तो उनके स्टाफ में से मेगा मैम जैसे कोई भी स्टाफ मेंबर से बात करके हमको पूरा सेटिस्फेक्शन मिला है, पूरा सेटिस्फेक्शन मिला है, ताकि हमको कोई दिक्कत, कोई टेंशन हमको विजन की तरफ से तो अभी तक तो नहीं मिला है। और आई होप दैट कि फ्यूचर में भी हमको उनकी हेल्प मिलती रहेगी, ये हम पूरा चाहेंगे। ऑलवेज सर, ऑलवेज। और सर, आप जो भी स्टूडेंट्स जो प्लान कर रहे हैं या तो जो भी पेरेंट्स जो जर्मनी के लिए प्लान कर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहते हो? वही, क्योंकि आपके, मुझे पता है कि आपकी जो बेटी है, मतलब पीठ की सिस्टर भी कनाडा जा रही हैं और ये भी जर्मनी जा रहे हैं, और आप एक ही साल में दोनों का पूरा फाइनेंसेस रेडी करते हो, तो आप कर रहे हो, तो आप दूसरे जो पेरेंट्स हैं या जो जिनके 2 बेटे या 2 बेटियां साथ में जा रहे हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहते हो? सलाह तो मैंने फेस किया है फाइनेंशियली, आई एम वेरी नॉर्मल मैन, और उसमें 2 बच्चों को एब्रॉड के लिए फ़ाइल करना इस समय में बहुत मुश्किल भी था, मगर बच्चों के फ्यूचर के लिए जो करना है तो पेरेंट्स की एक जिम्मेदारी होती है कि उनके ड्रीम जो है, उनका जो होप है, उसको पूरा करने के लिए पूरा ट्राई करना चाहिए। और मैं सभी पेरेंट्स को यही कहता हूँ कि आपके बच्चे जो बाहर जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ज़रूर उनको मोटिवेट करें, उनको हिम्मत दें और अच्छी एजेंसी से बात करवाएं, ताकि कभी कभी ऐसी भी एजेंसी मिलती है कि हम घूमते रहते हैं और कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, मगर हमने फर्स्ट और लास्ट एक ही जगह पर फाइल किया है जर्मनी के लिए, तो हमको तो कोई तरफ से दिक्कत नहीं हुई है, इजीली हम वहाँ पर ये सब सेटअप कर सके। ग्रेट सर, ग्रेट सर। मैं भी आपको अभी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि फाइनली जर्मनी जा रहा है 1.5 साल के बाद, कोरोना के बाद। और जर्मनी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है फ्लाइट्स का, कहीं से घूम के नहीं जाना, जैसे लोग अभी कनाडा जा रहे हैं थर्ड कंट्री से होके। बट जर्मनी ऑलवेज स्टूडेंट्स के लिए हमेशा सबसे पहले खड़ा रहता है। लास्ट ईयर भी जैसे कोरोना के बाद सबसे पहला कंट्री था जर्मनी जिसने अपने स्टूडेंट वीज़ास ओपन करे थे। तो आज भी जर्मनी में कोई फ्लाइट बैन नहीं है, कुछ भी नहीं, आप कभी भी जाओ कभी भी आओ, स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं है। तो सर, ऑल द बेस्ट वंस अगेन, ऑल द बेस्ट थियर्स। आप प्लीज़ जर्मनी में जाके बहुत मेहनत करना, आपके पापा ने बहुत इन्वेस्ट किया है आपके पीछे, हमने भी बहुत टाइम आपके पीछे इन्वेस्ट किया है, तो आई होप कि आप जर्मनी में जाके यू विल डू द वंडर्स। थैंक यू सर, श्योर। सी यू, बाय बाय। Hello, my name is Tirthyas. I have received my student visa from Germany with help of Amritpala Vision. I have in contact with them since 2019 and they have helped me from every single step, from getting my admission to receiving my student visa. They have helped me in every single step. If you need any guidance for your visa, I would highly recommend you to visit Amritpala Vision. If you need any help in Germany, I will always be there for you. See you soon in Germany. All the best.